distance, so this small distance is already we have taken in semicircle, that is 4r upon 3 pi. So this small distance is same as 4r upon 3 pi. So this distance is 4r upon 3 pi along x-axis and same for y-axis. ठीक है, along y-axis, same distance along y-axis. ठीक है, x-axis से भी distance रहेगा 4r upon 3 pi and y-axis से भी distance रहेगा 4r upon 3 pi. ठीक है, अगर suppose instead of this origin at this point, if it is origin at this point, so I am writing down here as xc is and yc both are same, that is 4r upon 3 pi. What about the area of circle, quarter circle? तो पाई आर स्क्वायर तो था ही पहले से, डिवाइडेड बाय 2 क्या था, सेमी सर्कल. अब आएगा डिवाइडेड बाय 4 फॉर क्वार्टर सर्कल. सपोज इंस्टेड ऑफ दिस वी आर फाइंडिंग आउट विथ रिस्पेक्ट टू एट दिस पॉइंट. अगर सपोज मेरे लिए अगर पॉइंट ऑफ रेफरेंस इज और एक्स एंड वाई एक्सिस का स्टार्टिंग पॉइंट इज एट दिस पॉइंट, ये पॉइंट से है तो ये दोनों तो इक्वल है, बट ये पॉइंट से है तो ये डिस्टेंस मालूम करना है. व्हाट इज द रिमेनिंग डिस्टेंस? तो r is the complete radius, 4r by 3 pi is the smaller distance. So this remaining distance is r minus 4r by 3 pi. So this concept is very very important. If it is located along this side, so we will call this as, this remaining distance is r minus 4r upon 3 pi. r minus 4r by 3 pi. Similar हाइट्स में भी क्या रहेगा, हाइट में भी वही कंसेप्ट यूज होगा जैसा यहाँ पे था. तो सिमिलर वे में हाइट में भी कंसेप्ट क्या यूज होगा, दैट इज r माइनस 4r अपॉन 3 pi. 3 pi कंप्लीट डिवाइड नहीं है, ठीक है. r माइनस 4r बाय 3 pi, दिस 3 pi इट हैज बीन डिवाइडेड बाय दिस 4r बाय 3 pi. ठीक है, ये कंप्लीट डिवाइड करेंगे तो formula will be wrong and the calculations and the answers will be wrong. ठीक है, तो r माइनस 4r बाय 3 pi. अगर ये एक्सिस ऊपर से पूछता है तो ये r माइनस 4r बाय 3 pi, नीचे से अगर पूछता है तो 4r बाय 3 pi, ये लेफ्ट साइड से पूछता है तो डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशंस वी हैव टेकन केयर. ठीक है, तो ये क्वार्टर सर्कल. सेम वे एक फिगर बाकी था. तो नेक्स्ट इज 6th इंपॉर्टेंट फिगर इज आइसोसेलियस ट्राइंगल्स इन विच साइड्स आर making an angle of 60 degrees. All the 3 sides are equal, isosceles triangle. ठीक है, तो all the 3 sides are equal. So while drawing this, okay, isosceles triangle, the shape may be somewhat, it is not to the scale. Yes, okay. So how to find out the CG for this isosceles triangle? Again division of this I have shown you how to divide this. ये ऐसा डिवाइड करेंगे आप इसको. ठीक है, यहाँ से भी डिवाइड कर दो, यहाँ से भी डिवाइड कर दो. ठीक है, तो ये डिस्टेंसेस क्या रहेगा, ये CG, दिस इज द CG पॉइंट. ठीक है, सेंटर इज द CG पॉइंट. अगेन आप सपोज दिस टोटल width is B, width of this figure is B and this height is h. CG बहुत सिंपल है, क्या रहेगा CG, b by 2, x डिस्टेंस है b by 2 and y डिस्टेंस है, but y डिस्टेंस है it is somewhat different. y डिस्टेंस है, if it is an isosceles triangle, y distances are somewhat different. So 1/3 of h and 2/3 of h. ठीक है, 1/3 of h and 2/3 of h. That means xc क्या बनेगा, देखो इसका xc is b by 2, but yc b by 2 नहीं रहेगा, 1/3 of h रहेगा. ठीक है, yc 1/3 of h. एरिया क्या रहेगा, एरिया सेम, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. So in this way we have calculated or we have find out the CGs for the different figures. ठीक है, CG concept is again important.
So in today's lectures, we have gone through the concept of CG. We have drawn we have located the CG for the different figures, whether it is a rectangular or triangular or circular, semicircular, quarter circle, isosceles triangle. So all these CGs should be taken care while solving the problems. Okay, while solving the problems, this concept should be clear. We have to locate the CG. We have to find out the x and y distance. So you have to go through this concept. ठीक है, आपको ये पहले एक पेपर पे एक प्रॉपर वे में you have to write down this all x and y axis for all the figures so that it can easily be solved. ठीक है, while solving the problems, there should not be any confusion regarding at which axis or what should be the distance along x and y axis. ठीक है, so you should write down all this. You should draw the figures and you should write down all the x and y axis distances of CG along x and y axis in a separate figure so that it should be clear. So depending upon this basics, we will solve the problems in next lectures. So today we will end this lecture related with the unit number 3, that is the concept of CG was very, very important. We have gone through the definition of CG. We have drawn or we have calculated or we have find out the CGs for the different figures. So today's lectures is very, very important. So you should go through the today's lectures so that depending upon this today's lectures, we will solve some more problems or we will start the problems related with the center of gravity. Okay, so here we will end this today's lectures. Thank you everyone.